एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडियस रेशियो रूल एंड डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। फर्स्ट वी स्टार्ट विद रेडियस रेशियो रूल। इफ वी नो द रेडियस रेशियो रूल, then we can easily calculate the coordination number, directly tell the coordination number of the compound and the geometry of the compound. So we start with radius ratio rule. Radius ratio rule. How we calculate the radius ratio? Radius ratio is calculated by dividing ratio of radius of cation to the radius of anion. Radius of anion, or we can write radius ratio is equal to radius of cation is r plus and radius of anion is r minus. If we divide radius of cation to radius of anion, then we get a value of radius ratio, and according to that value we can directly tell what is the coordination number of compound and what is the geometry of compound. If value of radius ratio comes out between 0.155 to 0.225, it is radius ratio. Then coordination number is 3 and geometry of the compound is planar triangular. And if the value of radius ratio comes out to be 0.225 to 0.414, 225 to 414, then coordination number will be 4 and geometry will be tetrahedral. And if this value, that is the value of radius ratio, come out between 0.414 to 0.732, then coordination number will be 6 and geometry will be octahedral. And finally, if this value comes out to be 0 points in between 732 to 1.0, then coordination number is 8 and geometry will be body centered cubic. Body centered cubic. For example, we take one numerical in which we are given the radius of cation A positive is 88 picometer and radius of anion, that is B negative, is equal to 200 picometer. Now we have to calculate the coordination number of compound formed by these cations and anions, that is A, B. So first we calculate the radius ratio. Radius ratio, that is radius of cation divided by radius of anion. Cation की radius 88 picometer and anion radius is 200 picometer, and if we divide this, the value comes out to be 0.44, and this value lies in the range of 0.414 to 0.732, and here the value of coordination number is 6 and shape of the compound is octahedral. So here we can directly tell coordination number is 6 and shape is octahedral. So this is the radius ratio rule. Now further we do what is the relationship between nearest neighbor distance, which is denoted by D, as length of unit cell, which is denoted by A, and radius of the atom, which is denoted by R. What is the relation between these three terms? We do the relation between nearest neighbor distance
nearest neighbor distance, which is denoted by small d, and edge of unit cell, which is denoted by small a, and radius of atom, which is denoted by r. And in all the three cases, first case is simple cubic lattice, second is FCC, that is face centered cubic, and third is BCC, that is body centered cubic. In case of simple cubic, unit cell is like this. सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एट कॉर्नर्स 5, 6, 7 and 8, and this is the edge length, which is denoted by a. Radius of atom is denoted by r, and nearest neighbor distance is distance between two spheres, which is denoted by d. And in case of simple cubic, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की वैल्यू d इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल क्या होगी? d इज इक्वल टू कितना होगा ये वाला डिस्टेंस? नियरेस्ट नेबर d इज इक्वल टू a, दैट इज एज ऑफ यूनिट सेल. एंड r की वैल्यू रेडियस ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? r इज ऑलवेज d/2. तो यहाँ से हमारे पास रेडियस ऑफ एटम क्या आ जाएगा? d की वैल्यू कितनी है? a डिवाइड बाई 2. This is the relation between nearest neighbor, edge of unit cell and radius of atom in case of simple cubic. Now we calculate in case of face centered cubic. In case of face centered cubic, unit cell is like this, and atoms are present at corners and face center. How many face center are present? 6. 1, 2, 3, 4 और एक ये फ्रंट वाला फेस, एक बैक वाला फेस. तो फ्रंट एंड बैक. नाउ हाउ वी कैलकुलेट द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस, which is calculated by Pythagoras theorem in triangle ABC. AB distance is nearest neighbor distance in case of face centered cubic, which is equal to d is equal to a by √2. And from here we can calculate the radius of atom in case of FCC. Radius is always d/2, which is nearest neighbor distance divided by 2. So here r value comes out to be, d की वैल्यू a by √2 and divide में 2 करना है तो a/2√2. That is the relation between face centered cubic. Now we calculate in terms of body centered cubic. In case of body centered cubic, atoms are present at what position? At corners and at the center of the body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And एक एटम कहाँ प्रेजेंट होगा? इन द सेंटर ऑफ दिस यूनिट सेल, दैट इज बॉडी सेंटर. तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाला डिस्टेंस. इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहले हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC. देन वी कैलकुलेट द AD distance by using triangle ACD and applying the Pythagoras theorem. और ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किया है, जिसमें हमने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी. तो वो सेम कैलकुलेशन है, मैं रिपीट नहीं कर रही, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो AD की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. वही वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो रही है, इसलिए मैं उनको डायरेक्ट लिख रही हूँ.
यहाँ से हमारे पास डी दैट इज़ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास आ जाती है कितनी, √3/2 a इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल, एंड आर वैल्यू के लिए आर वैल्यू इज d/2. पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, r comes out to be √3/2. डिवाइड में 2 और करना है तो 2 × 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4, √3/4 a. दैट इज रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम इन केस ऑफ body centered cubic. This is the relation which we have done, and numericals are asked based on these formulas and these relation. For example, we take the example of one numerical like xenon atom crystallizes in FCC, that is face centered cubic lattice, and edge of unit cell is 620 picometer. Edge is represented by A. We have given A is equal to 620 picometer, and we have given the FCC lattice. So we know the formula, and we have to calculate the nearest neighbor distance. Calculate the nearest neighbor distance. Then how we calculate nearest neighbor distance is denoted by D. In case of FCC lattice, what is the relation between edge length and nearest neighbor distance? It is D is equal to A by √2. D is equal to A by √2. A value is given. A value is 620 picometer and √2 value is 1.414. If we divide this, then we get the value 438.5 picometer. That is the nearest neighbor distance in case of xenon. And from here we can also calculate the radius of atom, which is d/2. D value comes out to be 438.5 divided by 2. Then we get the value of radius of atom. 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 219.25 picometer. In this way we can calculate the nearest neighbor distance and radius of atom if edge length is given, and if any of these values is given, then other value can be calculated by using the formula and by knowing the lattice, that is simple cubic, FCC and BCC. Now we calculate the formula for density of the cubic crystal. How we calculate the density of cubic crystal? Density of cubic crystal. Density of cubic crystal. We know that in simple calculation density is mass per unit volume, mass divided by volume. In case of cubic crystal, we take mass of unit cell and volume of unit cell. Unit cell is like this. It is a cube with edge length A. Now from here we can easily calculate the volume of this cube. Volume comes out to be volume of unit cell is equal to A cube, that is the edge which is side of cube, उसका क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, एंड एज लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर, A picometer cube. And if we want to calculate in terms of centimeter, then picometer is converted into centimeter by using A into 10 to the power minus 10 cube into centimeter cube. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, A का क्यूब करेंगे दैट इज़ A क्यूब इंटू 10 to the power minus
10 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻30 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब. We have calculated this denominator in the density formula. Now we calculate the mass of unit cell. How can we calculate the mass of unit cell? Mass of unit cell is calculated as number of atoms in the unit cell and multiply करेंगे mass of each atom. तो mass of total unit cell आ जाएगा हमारे पास number of atoms in the unit cell and it is multiplied by mass of each atom. Mass of each atom. If we denote the number of atoms in the unit cell by Z and mass of each atom by M, then it is mass of unit cell is Z into M. That is mass of unit cell. And mass of each atom M. How can we calculate the mass of each atom if we have given the atomic mass? Then mass small m, mass of each atom is equal to atomic mass. If atomic mass is given and it is divided by Avogadro number. Avogadro number. Atomic mass is represented by capital M and Avogadro number is represented by N naught. Then small m value comes out to be capital M divided by N naught. If atomic mass is given, then we calculate the value of mass of each atom, that is small m. Now we put these values in the given first formula. Density is mass of unit cell डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे पास कितनी आई थी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 एंड मास ऑफ यूनिट सेल इज जेड क्रॉस एम. वहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू हमारे पास आई है कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एन नोट. तो हमारे पास यहाँ से डेंसिटी क्या आ जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल. मास ऑफ यूनिट सेल इज जेड क्रॉस एम और एम की वैल्यू है कैपिटल एम डिवाइड बाई एन नोट. तो एन नोट को मैं डिनोमिनेटर में पुट कर दूँ यहाँ पे. इनटू क्या है, इनटू है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 एंड यूनिट्स आर इन, मास इज इन ग्राम एंड एज लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर. तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगी हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब. And this density value is comes out in units of gram per centimeter cube, where in the numerical we have given these values and density of the cubic crystal can be easily calculated. For example, we do one numerical. Numerical is silver atom form FCC arrangement and edge length of unit cell, edge length of unit cell is 408.6 picometer and we have to calculate density of silver and we have given atomic mass value. Atomic mass is represented by capital M which is given 107.9 U. Now density के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या किया था हमने, density is calculated by Z cross M divided by n naught into a cube, a is in centimeter cube, into 10⁻⁻30. यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z, बिकॉज वी नो सिल्वर फॉर्म FCC अरेंजमेंट. FCC अरेंजमेंट में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर. कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8
into 8 atoms are present and phase पे contribution is 1/2 into 6 atoms are present. यहाँ से 1, यहाँ से 3 आ जाएगा हमारे पास. तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इज इक्वल टू 4. जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4. एम की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 107.9. एन नोट we know Avogadro number which is 6.022 into 10 to the power 23 atoms per mole. Atoms per mole. And as length is given as 408.6 in picometer. और अगर इसको हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो कितना आ जाएगा 408 इंटू 10 टू द पावर -30 सेंटीमीटर -30 नहीं, वो इसका क्यूब करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे तब आएगा इन सेंटीमीटर. इफ इट्स वैल्यू इज 408.6 पिकोमीटर then in centimeter its value comes out to be 408.6 into 10 to the power -10 centimeter. Now we put these values in the formula. Z is 4 into M is 107.9 which is given. N naught is 6.022 into 10 to the power 23 and A value is 408.6 into 10 to the power -10 सेंटीमीटर. और इसका करना है हमें क्यूब. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितने 4 इंटू 107.9 डिवाइडेड बाई 408.6. इसका क्यूब करेंगे इंटू 10 टू द पावर -30 इंटू अवोगेड्रो नंबर 23. फर्दर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ से ये पॉजिटिव वैल्यू 23, ये नेगेटिव का माइनस कितना बचेगा 7, वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. उसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेंसिटी. In this way we can calculate the density of the given atom. So we have done the radius ratio rule, relationship between edge length, nearest neighbor distance, radius of atom and how we calculate the density of cubic crystal in case of solids. I think वीडियो आपको समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.